No problem. Yeah. Yeah, go ahead. So, how big this problem is memorizing, right? Yeah, you were saying something, Garima. Go ahead. So, sir, according to me, memorizing, we think that if we will memorize, we will forget. So, Hmm. actually, we forget that. Means Okay. by this Hmm. fear makes us forget that thing. Memorizing is actually a problem because we think rote learning we can't do every time. Hmm. Rote learning we can't do every time because everything will not support. Sometimes we need to understand the concept as well. But people don't Okay. go for understanding the concept and they start learning means rote learning, and that is not going to help in exams actually. Like sometimes we they will learn a little bit, they learn 2 3 lines, but if in exam it comes to write a paragraph about that and you don't have any concept how to write it, so it will be a problem there. Okay. No problem. Yes, Niharika. What do you mean by? Do you think that this is a problem during the exam? Memorizing power, like most of the time, you are getting. You are forgetting the things easily. Yes, so for me, it's a challenge because whenever I try to memorize things a little faster before examination, I Hmm. feel very nervous because uh, nervousness makes you easily forget things, and also if I don't prepare it from like since starting means before 2 or 3 weeks from examination, then it's get very difficult Hmm. to memorize the things in a small amount of time. So I what I do is I try to write things which I have to learn and memorize Like them. what Garima was mentioning, rote learning. Yes, sir, but for that also you have to understand the concept. If you don't know Hmm. the concept, then you will definitely forget. And Hmm. if you know the concept, then you can retain these learnings for a long time, and it will help you in your examination to work things out. Okay, no problem. Yes, Ankita, do you think that this is a problem, and because of this, our final marks are getting affected, or even in UPSC, things will get affected because of our whatever competitive exams you are going to take, that will impact Yes, sir. memorizing problem, huh? So I think that memory problem is going to affect me personally as I know about myself because Hmm. it's always that I remember something, I always try to improve my vocabulary. Hmm. Whenever I try to remember things, it is in my memory for a short period of time. But at the right time when I want it, I just forget the word. It's like, yeah, I know, but I can't say that. I'm Hmm. not getting that word right at the moment. So Hmm. definitely, if I get a way to increase the memory power, it is going to help me for my entire life. Forgetting things are always very dangerous for us, and especially when it comes to our study or career building, it's more dangerous. So I feel Hmm. I need a really a skill or any way to retain my memory power. Okay, okay, no problem. Yes, Kushi, how big this problem is for you, or there is no problem at all? Kushi Chamadia. Okay. Kushi is not able. So Yeah. memorizing is obviously a problem for me because I Mm-hmm. Seems like her network is not working properly. so memorizing is a problem for me because I really Uh-huh. Bolo. Okay. Yes, sir. Srishti Agrawal. yes, sir. Tell me how big this problem is. So for Uh, me, uh, memorizing is not very different because if I understand the concepts, so it becomes easy for me to write the answers, to understand and to write it in my own way, than to go as per the books or as per the words word by word. It becomes very difficult for me to recollect the thing as it is. If I understand the things, it becomes easy for me to write and to retain the things in my mind than to learn
the specific words, and when it comes for the keywords or some definitions that has to be written word by word, it becomes very difficult for me to retain that. That is the biggest problem for me during my exams. I can't write the definitions that has to be written as it is. So you are not audible. Yes, Sivangi, how big this problem is for you? Yes, sir. First of all, good evening to all. Yeah, well, Sir, hmm, it is of it is of great problem for not only me but for all of us. And I think memorizing a particular thing or understanding a concept and giving its presentation on paper is a very different thing. So we need some as well for presenting anything on paper. Means if by chance if you are giving any surprise test key, you have to write 200 or 250 words on it on certain topics. Means so we should know the presentation skill as well. Key, if we need the keywords, then through which we can complete the presentation or any examination. So means and also rote learning in some cases in is important, especially some of our teacher demand ki the definition should be same as it is given in the book. There are some definitions given by some scientist, or so we cannot write that definition in our own words. Means if it is given by Marcel, so if I am writing according to Marcel, so I can't write that definition in my own words. So the presenting rote learning on the paper is quite challenging for me. okay, no problem. So So do you need any solution? Musira, do you need any solution? Is there any solution for this? Like problem is there, everybody is mentioning. Is there any solution for this solving this memory problem? Solution for me was is that I try to picturize things whenever I have to learn something and go through something. I try to picturize in my mind. For example, I have to learn answer of maybe around 10 to 12 lines. Then I will picturize it in my mind, like I will visualize it as we had a class on that. So I would do the same, and that would have been a great solution for me till now. Okay. Yeah, who else is there? Grishika, how big this problem is and what is the solution as per your understanding? Good evening, sir. So, Yeah. sir, according to me, memory varied amongst person because the way of storing your memory is varied in different kinds of things. Means if we talk about in a class, there are different kind of students. One can understand the things in a one go, and some people takes times to understand the thing. But according to me, it's quite bit hard because many of the students think that we can study last night before the examination, the next day mind properly and that you output. But if you are understanding the concept beforehand, like when at first when the concept was teacher to you in the first go in the class, then if you are understanding the concept at that moment now, then it will be helping you to understand to write on the examination day rather than studying in before 1 hour and writing on the exam. And if I talk about this solution is, if I talk about the solution, so I would suggest people to, rather than having the stress of examination, we may focus on the learning the concept and getting to know the things according to your own interest. Means understanding it like we can take learn the things by our own realistic examples, like how it this thing is particularly relating to your own beliefs and systems. So it will be kind of relate to you like if we talk about like we have that Mughal periods like Akbar, like Babur, and so we use a code word also to remember all this kind of things. Na? So that's kind, and we can take that in history like we are remembering the year. So we are remembering the year like the my birthday, sister's birthday is on that date, and I'm correlating that things with that. So it will be kind of helpful to the
people for students for storing in the memory and writing and doing your best in the examination. Okay, great. Thank you. Yeah. So Supriya, Diksha, Sakshi, Aishwarya, please open your camera, guys. Those who are having an open camera, they will get the open camera option, like to speak upon. Otherwise, you will not get the opportunity. So Supriya, we are talking about today. You are preparing for UPSC, and whatever you are studying today, you may forget tomorrow, right? तो कितना भूलोगे, कितना याद करोगे? So this is a big problem, and even your exams are coming. Like after 3 months, you guys have to take your first exam, where you have to run for the bigger score. जैसा होता है generally first year में, everybody is running for the marks. So memory problem, how big this problem is for you, and what is the solution to it? Yeah, Supriya, you can open your camera or mic. Sorry. Yes, sir. Yeah, you can open your mic. Yeah, go ahead. Sir. Say whatever you want to say. Don't worry. Whatever you are experiencing, you have to share your own experience, right? सर मैं मतलब अभी नहीं बताऊंगी, एक दो के बाद. एक दो के बाद, ठीक है. ऐश्वर्या, how big this problem is and what is the solution as per your? Sir, according to me, memorizing thing is a very serious problem, because if we memorize things, something like a topic, then it will be remained in our mind for a shorter period of time, and because of that, we will get lack of understanding of the topic, which will be not helpful for our studies and our exams. So, according to me, the solution for this problem is to understand the topic rather than memorizing it, which will help us in gaining knowledge about the topic, and obviously it will help us in examinations. Okay. Srishti, have you spoken? Yes, sir. अच्छा, आपने बोल दिया है. Yes, Diksha. Yes, so according to me, sir, it is a very big challenge for every student. So While you are speaking, guys, please use your hands, use your body language. Just like in a normal classes you are using, all your body language is very important. Because 55% of the time, I will be listening you through your body language. 38% of the time, I am focusing on your tone and pitch. So it's very important, even in the virtual communication, that you maintain those two aspects of the communication. Because 93% of the time, these two elements will help you to communicate and convince other people. Go ahead. Sir, according to me, it is a very big challenge for the every students. Sir, mostly it is seen in exam time. Due to exam pressure and fear of exam, the students may memorize the things, but it does not get stored in our mind. We forget the things easily, but sometimes we have learned when we sit in the exam hall, and but when the paper came, we forgot the things. We are not able to write the things which we have learned or memorized. So basically, according to me, solution is this, that we should understand the concept, but sometimes it is like a definition, so we can't remember that. So, sir, for definition, I don't know a solution. I'm searching for it. But for concepts, we should first understand, and then find a keyword, and connect to the real life examples. Like something happened in some, we are studying a law, so we can connect it to the our home key. If this will happen, so we have to fight for our rights. Like real life examples, and picturize, and we can make flow charts. We can learn for this. Okay, no. Yes, Maurya, Khushi Maurya. Wait, Supriya, I will come to you.
Yes, sir. So Tell for me. me, it's a very big challenge to Hmm. memorize the thing in the exam center just because I'm very bad at vocabulary. I try to like search a new thing, search a new words, but at the time I'll just forget about that. And for definite, I was for a study material. I would like to make a short trick for learn the um features, advantage, disadvantage, merit, demerit. I use first word of that heading and make a sentence and that remember in my exam center. And for definition, I would like to make a part in between and then I'll write 3 4 times. It should learn and in exam center. You are working very hard. Yes. Yeah, Supriya, tell me. Yes, sir. Hmm. So this is a big challenge. Uh, this is a big challenge. Mm, some example. This this happens to me. Uh, I am uh, exam previous. I am whole syllabus cover. Then go to exam hall and when question paper my front I am sometimes I am forget जैसे कि मतलब मैं पढ़ कर के जाती हूँ और फिर मैं सब भूल Don't जाती get into in Hindi. Don't worry about right and wrong English. हम लोग समझ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हो. If you'll speak again and again, na, then the suddenly flow will come. Only thing you have to use only helping verb. Yeah, that's all. Okay, And ah. so 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 this happens to me. So this is a big challenge and मतलब मुझे लगता है कि इसका मतलब सॉल्यूशन बहुत जरूरी है. So 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 I read when I read this time, so so connected this topic and pie chart मतलब diagrams so help him I ठीक है, बहुत अच्छा बोला. वेरी गुड, वेरी गुड. डोंट वरी. So today we are going to solve this problem. ये प्रॉब्लम अगर हमेशा के लिए सॉल्व कर दी जाए, मेमोरी प्रॉब्लम कि आपको याद करने की अब दिक्कत ना हो, तो एटलीस्ट नाउ यू विल बी फ्री. एग्जाम में आ गया कोई बात नहीं, यूपीएससी एग्जाम देना है कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेमोरी पावर ठीक रहेगा. कर सकते हैं ऐसा आज? सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को? हाँ सर. Yes, Yes, sir. Yes, sir. So do you really want this solution? Yes, sir. So basically it's a scientific way to memorize, but we are not using those scientific ways, and that's why we are failing again and again, and we are wasting lots of money in terms of using pen and paper like rote learning, which Garima has mentioned. We are using lots of time. We are becoming unnecessary, we are getting pressurized in the last moment, and because of that even our parents are getting pressurized sometimes. We are extending our fear to them. याद नहीं है अभी एग्जाम आ गया क्या करें, and the whole night sometimes some of the families just sitting and praying to the god कि कुछ तो लिख के आगे. Especially in the board exams you must have experienced कि some of the families were going with their children to the board exam centers and coming back, so the child should have the enough confidence to write in the exam. But nobody has taught since beginning how to memorize the things in a scientific way.
so that you can actually memorize for longer term also, कि जो आज पढ़ाई कर रहे हो उसको अगले 3 महीने तक कैसे आप रखोगे दिमाग में। अगर ऐसा हो जाए तो दैट विल बी ग्रेट। एक ही बार पढ़ना पड़ेगा आपको, बट हम अभी कुछ और पढ़ते हैं, फिर एग्जाम के समय कुछ और पढ़ते हैं, एंड वी आर वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम। और अगर एग्जाम अनाउंस हो जाता है तो सबको बताते हैं कि देखो हमारा एग्जाम आने वाला है, बिकॉज जस्ट वी वांट टू शेयर अवर ओन फियर विद अदर्स कि हमारा एग्जाम आने वाला है, अभी हमें और कोई काम नहीं। हालांकि पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी, और पढ़ाई एक दिन पहले ही होती है, वो भी नोट्स उधार मांग मांग के, अपना भी नोट्स नहीं होता कई बार। तो वी विल टॉक अबाउट कि प्रॉब्लम शुरू कहां से होती है, वाई वी आर लूजिंग दिस मेमोरी पावर, कि हम कुछ याद कर रहे हैं वो भूल क्यों जाता है। तो फर्स्ट यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, देन सेकेंड प्रॉब्लम विल कम कि हाउ टू सॉल्व दिस शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म के लिए। कल एग्जाम है तो क्या करेंगे, और अगर 3 महीने बाद एग्जाम है तो कैसे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं इस पे बात। Yes, sir. Yes, sir. ठीक। Yes, sir. तो पहले हम ये समझेंगे कि हमारी मेमोरी लॉस क्यों होती है। ठीक है, लेट्स गो विद द पीपीटी, जस्ट give me 1 second. So basically we are always in a hurry, and we are having a last minute stress just because of the memory power. So let's understand ki what is happening with your mind. So basically just try to understand that you have two memory centers. One is your conscious and one is your unconscious one. Unconscious is having a unlimited data memory power, but your conscious memory is always having a limited, just like your pen drive. So whatever you will see, you will listen, you will talk, you will imagine, that will capture your data storage of that particular day in a particular hour. So that's why, like in memory power, like in a pen drive, suppose there is a 1 GB pen drive and 1 GB, memory is full. The moment you will put it into the laptop and you want to, put some other element, some other file, what laptop will show? Memory is full, kindly delete something. So you have a choice here to delete as per your choice. But in your natural memory power, like, in your mind space, mind will not ask, because mind will based on your attention point. Those points memory will remember, which you will remembering again and again and again, or where you have stress for something, or where you created some attention. So memory will keep those memories only intact, and rest all other memory where you have not given the attention, that memory will get removed from your mind. And even you wish to remember, you will forget everything. So अभी एग्जाम के समय क्या बोला जाता है कि आप किसी से फालतू बात मत करो, ज्यादा सोचो मत। तो एक्चुअली those things are irrelevant things, and that is getting converted into data. अगर आप सड़क पे जा रहे हो, and if you're looking towards the picture or hoardings, or the way people are talking, or somebody has come and you are involving with their day-to-day routine talks, suddenly those things will also capture your space. तो एग्जाम की जगह क्या आ गया? अननेसेसरी डेटा आ गया, एंड दैट्स व्हाई you are not getting enough space to remember those things. Now you see that what exactly is happening with your mind. So this is basically a chart which has been prepared by these psychologists. They also studied why we are forgetting the things. Forgetting curve is there. And what is the speed of forgetting the things? So then against the time, they calculated that how much percentage you are losing. So they realized that after 20 minutes, whatever you will memorize, in a good way, bad way, anything, you will be able to remember only 58%. It means almost 40% or 38%
of the things what you have remembered after 20 minutes you will delete from your mind. Your mind will delete. So first, today onwards, stop blaming yourself ki it's your problem. It's not your problem. It's your mind's problem, or it's everybody's mind's problem, or even the structure of the mind is like that. So nowhere you have to blame. Every mind works little bit here and there in the same way. Everybody has a right to forget the things. After 20 minutes, 40% will get deleted automatically. So you are not the culprit. You don't have to blame yourself कि पता नहीं मेरी मेमोरी खराब है. कई बार हम ब्लेम करते हैं ना अपने आप को. अंकिता, कोसते हैं कि नहीं अपने आप Yes, को? sir. भगवान के Yes, सामने sir. जाके कहते हैं कि भगवान मेरे में दिमाग को क्यों नहीं ऐसा किया. अब 1 घंटे के मेरे बाद साथ ही अगर ऐसा क्यों होता है? हाँ मेरे वो साथ ही बोलते ऐसा हैं। क्यों हुआ, अगली बार याद आ जाएगा तो 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा. तो 1 आवर के बाद क्या होता है कि आपका 56% डेटा जा चुका है. डिलीट हो गया 56% डेटा. 9 आवर्स के बाद 65% डेटा जा चुका है. और अगले दिन एग्जाम है. किसी तरीके से तो एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया था, और पता चला जब एग्जाम में बैठने गए तो वहां पे 67% डेटा उड़ चुका है. यानी जो याद किया वो 67% उसका हिस्सा गायब है. टूटा फूटा हिस्सा कुछ याद आ रहा है. अब उसको लिखने में कितनी दिक्कत आती है कॉपी पे. और अगर 2 दिन के बाद एग्जाम है तो और प्रॉब्लम है. ओनली 73% डिलीट हो चुका है. और गलती से अगर 1 महीने के बाद एग्जाम है तो केवल 20% याद रहेगा. 80% तो डिलीट हो गया. तो प्रॉब्लम किसकी है, आपकी है या मेमोरी की है? मेमोरी की। तो दोस्त क्यों दे रहे थे अब तक अपने आप को? मेमोरी की। अब अपने आप को दोस्त मत देना बंद कर दो आज से. ठीक है, अब क्या करें? हाँ, सर मेमोरी भी तो हमारी पार्ट है ना, तो उसी को ना दोष देंगे, मतलब हमारी गलती है जब मेमोरी की है तो। जितने लोग बैठे हैं सबके साथ यही होगा. तो यस। डोंट वरी कि उसकी मेमोरी आपकी मेमोरी से अच्छी है. एवरीबडी इज हैविंग द सेम मेमोरी पावर. ये आपकी गलतफहमी है. ओनली उनका अटेंशन स्पैन थोड़ा डिफरेंट होता है. 10% ज्यादा होता है आपसे, और ज्यादा कुछ नहीं होता है. जो बार बार याद करते हैं इसलिए उनको याद हो जाता है. अब देखो आगे क्या होता है. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. Yes, sir. ये जो नेचुरल प्रॉब्लम यस है इसको भी साइंटिफिक वे में आप सॉल्व कर सकते हो. यानी इस बड़ी प्रॉब्लम को भी, कि जो ये भूलने वाली बीमारी है या डिलीट कर दे रहा है मेमोरी बार बार, उस मेमोरी को भी आप धोखा दे सकते हो. यानी उसके सिस्टम को भी आप अपने हिसाब से कन्विंस कर सकते हो. चाहिए फार्मूला? नहीं चाहिए? तो चाहिए. चाहिए। याद रखो. लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम एक जरूर आएगी कि अब कुछ याद रखोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा दिमाग में, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे. ये गड़बड़ होगी तो देख लेना, ये प्रॉब्लम आएगी आपको. और एग्जाम में लिखने बैठोगे तो बहुत ज्यादा लिख दोगे. ये प्रॉब्लम सर सही है। ये प्रॉब्लम झेलने के लिए तैयार हो? वेरी गुड. यस सर। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट. देखो, अब इसको मेमोराइज कैसे कर सकते हो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे ही आप कोई एग्जाम या क्वेश्चन लिखते हो तो आप क्या करते हो कि रोट लर्निंग ले लेते हो पूरा का पूरा. बट द बेस्ट पार्ट कि अगर आपके पास मान लो 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन का सबसे पहले आपने फ्लो डायग्राम बना लिया इस तरह से. यानी कि पूरा क्वेश्चन का डिटेल लिखा हुआ है, बट टॉप पे आपने इतने में पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया. यानी आपने क्या किया, मेमोरी स्पेस कम कर दी. जितनी मेमोरी में आप एक क्वेश्चन याद करते, मेमोरी तो उतना ही था, मेमोरी पावर स्पेस उतना, तो आपने क्या किया, स्क्वीज कर दिया. अब आपने क्या किया, फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया.
तो अब इतने इतने इतना इतना करके आपके पास 10 क्वेश्चन एक बार में आप रख सकते हो उतनी मेमोरी में, राइट। और दूसरा कि जब आप फ्लो डायग्राम बनाते हो तो इस फ्लो डायग्राम को दिमाग में इमेज, जो दिमाग है आपका वो दो फॉर्म में काम करता है। एक है आपका स्टोरी फॉर्मेट एंड सेकेंड इज योर पिक्चर फॉर्मेट। उसको बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो जैसे ही आपने लाल हरा पीला काला करके एग्जाम ये सारी चीजें कर दी तो वो पिक्चर बना दिया, तो वो क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत जल्दी पिक्चर तुरंत याद आ जाएगा। तो यू हैव टू पिक्चराइज, लाइक मुसीरा वाज सेइंग, लाइक ना पिक्चराइज करती है। तो अगर आप इसको क्या कहते हैं फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करो हर एग्जाम के क्वेश्चन को, और दूसरा उसको पिक्चराइज कर लो, तो अब आपका स्पेस कम लगा। और आंसर अगर 10 आपको याद करने हैं तो 10 आंसर का पिक्चर याद करना ज्यादा आसान है, रादर देन कि वो 10 के 10 पूरे बड़े बड़े आंसर 4 4 5 5 पेज का। क्लियर है शिवांगी? यस सर। ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या करोगे कि मेमोरी का लॉस जो होता है ना, वो एक टाइम पीरियड पे होता है। अगर उस टाइम पीरियड पे वापस उसको रिपीट करा दिया तो मेमोरी रिकॉल करने लगती है। मेमोरी को अगर आप एक ही चीज बार बार याद कराओगे तो मेमोरी एक्चुअली आपका सर्वेंट है, वो आपका बॉस नहीं है। तो आप किसी चीज को बार बार जब याद कराते हो तो मेमोरी को लगता है कि मेरे बॉस को इसकी जरूरत है, तो वो क्या करती है उसको सबकॉन्शियस माइंड में रख लेती है। लेकिन उसको याद करने के लिए एक साइंटिफिक टाइम पीरियड होता है। जब आप डिप्लीट कर रहे होते हो, जब आपका मेमोरी जा रहा होता है, उसी समय उसको वापस याद दिलाना पड़ता है। जैसे अगर आप कोई भी चीज याद करो, मान लो यही एक क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज पे, अब आप याद करना चाहते हो तो इसने क्या लिखा, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल आर इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखा, फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखा, फिर मीटिंग ऑफ ग्लेशियर्स लिखा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, फिर फ्लडिंग लिखा, फिर उसके बाद इंड इफेक्ट लिखा, द लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन लिखा। तो इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन में इसका पूरा आंसर हो गया। ये यूपीएससी का किसी स्टूडेंट का है कि हाउ दे आर प्रिपेयरिंग, हाउ दे आर मेमोराइजिंग। अब ये 8 लाइन ही उसे याद करनी है, उसे पूरा का पूरा आंसर याद नहीं करना है। अब इसका डेटा वो भले जाएगी पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा और डेवलप करे। सेकेंड, आपको जब याद करना है तो आप आंख बंद करोगे और केवल ये मेमोरी में ये पिक्चर याद करोगे, इसका रिपीटेशन करोगे। सीधा अभी लर्न किया, आंख बंद किया, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, काम खत्म, मेमोरी में आ गया। ठीक 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद जब मेमोरी डिप्लीट करने लग रही है, डिलीट करने पे उतारू हो रही है, क्योंकि दूसरे और भी कई बातें आ गई आपके दिमाग में, या किसी की बात सुन लिया या कोई पिक्चर देख लिया, वो सब डेटा है। तो उस समय आंख बंद करके आपको कुछ नहीं करना है, केवल 10 सेकेंड में इसी पिक्चर को वापस दोहरा लेना है। ठीक है। और फिर उसके बाद थर्ड रिपीटेशन आंख बंद करके 6 to 8 आवर्स के बाद कर लेना है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ कॉस्टिंग नहीं आ रही है, ना टाइम लग रहा है, ना रोट लर्निंग हो रही है। आपको बस पिक्चर याद करना है 6 7 लाइन की। एंड फोर्थ रिपीटेशन, अगर कल एग्जाम है तो आप कल जाओगे और गारंटी दे रहा हूं कि आप 90 से 95% एज इट इज लिख के आ जाओगे। और पहला आंसर लिखने से पहले सबसे पहले जाके क्या करोगे, क्वेश्चन का ये पिक्चर बना दोगे। अगर 10 क्वेश्चन है तो पेज नंबर 1 पिक्चर बनाया, पेज नंबर 2 पिक्चर बनाया, पेज नंबर 3 पिक्चर बनाया, 10 के 10 क्वेश्चन का पिक्चर जाते ही आपने बना दिया। सो नाउ यू आर फ्री कि मैं एग्जाम में नहीं लिख पाऊंगी। अब आपके दिमाग से वो बर्डन हट गया है, अब आपको केवल एक्सप्लेनेशन पावर डेवलप करना है। तो ये फोर्थ रिपीटेशन के बाद आप देखोगे कि कल आप जाके आराम से 90 to 95% अच्छे से लिख के आओगे, गारंटी है। ट्राई करके देख लेना। और अभी से करने शुरू इसलिए बता दिया क्योंकि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, छोटे मोटे टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें ये सब टेक्निक्स आप यूज करो एंड जस्ट सी द रिजल्ट, सी द डिफरेंस। इवन आज कोई क्वेश्चन याद कर रहे हो,
उसको इसी टेक्निक के साथ याद करना शुरू करो। हर क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दो इमेज में, हर क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दो फ्लो डायग्राम में, एंड सी द डिफरेंस। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे, क्योंकि आपने क्या किया, इतने बड़े क्वेश्चन को बहुत छोटा कर दिया, मेमोरी पावर में इजिली रख सकते हो उसको। अब मान लो कि यही एग्जाम आपका 3 महीने बाद है, तो 3 महीने बाद तो बहुत 1 महीने बाद ही 80% डिलीट हो जा रहा है। तो 3 महीने बाद अगर है तो क्या करोगे? 3 महीने बाद है तो आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी की जगह लॉन्ग टर्म मेमोरी में उस चीजों को रखनी पड़ेगी। वो कैसे होगा? तो जो रूल था कि पहला रिपीटेशन आपने कब किया, ठीक लर्निंग के बाद, और दूसरा रिपीटेशन ऑलमोस्ट सेम है, 20 to 30 मिनट। यानी कि पहला जो 20 to 30 मिनट है, अगर आप सेकेंड रिपीटेशन उसमें नहीं करते हो तो ये सबसे बड़ी गलती करते हो, और यही सबसे बड़ी गलती होती है आपके भूलने की। थर्ड रिपीटेशन आप अब इस, अगर आपको लॉन्ग टर्म में याद करना है तो आफ्टर 1 डे आप याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो या रिकॉल कर सकते हो इमेज को। फोर्थ रिपीटेशन ऑफ 2 to 3 वीक्स बाद कर लो, वो रहेगा दिमाग में आपके। एंड फिफ्थ रिपीटेशन 2 से 3 महीने के बाद कर लो, अगर आपको लॉन्ग टर्म एग्जाम देने हैं तो ब्रेन क्या सोचता है कि इट्स नेसेसरी टू रिमेंबर फॉर लॉन्ग टर्म। ब्रेन को एक सिग्नल मिल गया, ब्रेन को क्या मिल रहा है, एक आप मैसेज दे रहे हो, राइट? एसोसिएटिव मेमोरी टू पुट इट ऑल टुगेदर, राइट? कि आप एक सिग्नल दे रहे हो कि मुझे ये बहुत जरूरी है, ये चीज संभाल के रखो मेमोरी में। एंड ब्रेन इज योर सर्वेंट, ब्रेन आपका मास्टर नहीं है। तो बोलोगे कि इसको 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 संभाल के रखो, तो क्या करेगा वो? उन चीजों को संभाल के रखेगा, बाकी सब डिलीट करता चला जाता है। अदरवाइज आपका दिमाग में बहुत सारा डेटा एक्सपोज होता है एवरी डे। आप कोई भी आप सड़क पे आ रहे हो, कुछ भी देखा, वो आपकी मेमोरी में चला गया। वो मेमोरी रखने की जगह नहीं होती, तो पहले की मेमोरी डिलीट करना पड़ता है आपको, ब्रेन को। अब और मजेदार चीज देखो कि जब आपने ये कर लिया तो बेसिकली कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे किसी ने कहा था ना कि कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो रादर देन मेमोराइज और लर्निंग, कि आप एकदम रट रहे हो। तो उसको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कैसे करोगे? अंडरस्टैंड करने के लिए आपने क्या किया, फ्लो डायग्राम बना दिया कि कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है, ये अंडरस्टैंड करना हो गया। समटाइम्स मेमोरी का ऑर्डर ऑफ द वर्ड, कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ये आपको ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स भी हेल्प करता है इजिली याद करने में, ठीक है? और यहाँ पे केवल कीवर्ड्स आपको याद करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर याद नहीं करना है, आंसर याद नहीं करना है। और फोकस ऑन की पार्ट्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है केवल उसी पे फोकस करो। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं कि जैसे सीरियल पोजीशन इफेक्ट, वी ऑलवेज रिमेंबर थिंग्स के बिगिनिंग में याद रह जाता है और एंड याद रह जाता है, बीच का अक्सर भूल जाता है। और अगर 2-3 क्वेश्चन एक साथ याद कर लिए तो दोनों तीनों मिल जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपका अटेंशन स्पैन है, जैसे अगर आप मान लो एक क्वेश्चन याद कर रहे हो तो दूसरे के लिए 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई म्यूजिक सुन लो। नहीं तो क्या होगा, ब्रेन को लगेगा कि पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा। हम क्या करते हैं, कई बार एक ही बार बैठे बैठे 8 घंटा पढ़े, सबको बताने लगते हैं कि आज पता है मैं 8 घंटे बैठ के लगातार पढ़ रही हूँ। वो 8 घंटे पढ़ तो लिए, लेकिन मेमोरी को क्या लगा कि वो 8 घंटे का पूरा स्पैन एक ही है। तो 8 घंटे में जितना पढ़ा सब वो मिक्स मैच करके दे देगा, यानी कि पढ़ा हुआ सब क्या हो जाएगा, खिचड़ी। तो 8 घंटे में आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई म्यूजिक सुन लो, कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लो। जैसे अगर थियरी पढ़ रहे हो तो उसके बाद मैथमेटिक्स पार्ट पढ़ सकते हो या कुछ और पढ़ सकते हो। तो सिमिलर मेमोरी क्या करती है, मिक्स कर देती है एक दूसरे के साथ, और यही गलती हम बार बार करते हैं। आपके दिमाग को रिलैक्स करना ज्यादा जरूरी है। एक क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर थोड़ा रिलैक्स कर लो, फिर उसके बाद दोबारा 10 मिनट का ब्रेक देके फिर पढ़ो, कोई म्यूजिक सुन लो। कई बार अपोजिट चीजें हमें ज्यादा याद आती हैं, जैसे डे अगर याद है तो नाइट ऑटोमेटिक याद आ जाता है, ठीक है? तो इस तरह से अगर कोई अपोजिट चीजें हैं, अपोजिट सब्जेक्ट्स हैं, तो उसको प्रेफर करो। एंड कई बार आप माइंड को डेस्कटॉप की तरह यूज करो। अब जैसे मान लो कुछ चीजें आपकी पर्सनल लाइफ में हो रही हैं, उसको आप इमोशनल होकर के
प्रोफेशनल लाइफ में भी जोड़ने लगते हो। तो दिमाग को ऐसे रखो कि भाई ये पर्सनल चीजें हैं, डेस्कटॉप में पर्सनल वाले स्पेस में रखो, पर्सनल वाली फाइल में रखो। ये एक प्रैक्टिस का विषय है, कई बार हम मिक्स कर देते हैं चीजों को। एंड सेकेंड कि हमेशा आपको एक स्टोरी बनानी है। जैसे मान लो कि अचानक गरिमा ने पूछा कि भाई अरे ये वाला क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज कैसे कर रही हो, तो हो सकता है कि शिवांगी जवाब दे कि अरे कुछ नहीं है इसमें, सबसे पहले मैंने ह्यूमन एक्टिविटीज का लिखा है, फिर ग्रीन हाउस गैसेज लिखी है, फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा लिखा है, फिर मीटिंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर लिख दिया है, फिर उसके बाद फ्लडिंग आ गया क्योंकि मेल्टिंग से फ्लडिंग हो रहा है, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो रहा है, और उसके बाद हमने डिस्ट्रक्शन लिख दिया। बस इतना ही तो है। तो उसने क्या किया कि स्टोरी बना दी, और वो स्टोरी तुम्हें याद रह जाएगी। लेकिन अगर उसी को याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। सेकंड, आपको विजुअलाइजेशन पढ़ाया था ना हमने, तो जो ये इमेज है आपका, वो क्या होगा, विजुअलाइज कर लोगे। ठीक है, कि कैसे। एंड समटाइम्स यू कैन क्रिएट योर वीडियोस, समटाइम्स यू कैन क्रिएट योर ऑडियोज। आंख बंद करके उसी को सुनो। एंड हमेशा जो भी पढ़ रही हो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा रिसोर्स भी पढ़ लो, देख लो, इमेज देख लो कि कुछ और तो नहीं है जो छूट रहा हो। राइट, तो दिस इज द वे यू कैन हेल्प योरसेल्फ। ठीक है, तो क्विक फीडबैक फॉर द डे कि गरिमा शुक्ला, टेल मी, डू यू थिंक दैट ये जो टेक्निक्स बताई गई है उससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी, या लग रहा है ये सब तो आता था मुझे? No, sir, it was really helpful for me. Many things like, as you told, that flow chart and picture formation, this was really new to me. So now I'll try with this, and then I'll see if it helps me. I'm sure that it is gonna help me this time. Yeah, sure, thanks. Yes, सुप्रिया, कुछ कहना चाह रही थी आप? Sir, I क्या have लगता some है? questions. हाँ, Sir, बोलो I बोलो have बोलो। some question. Sir, you said that मतलब important information important information मतलब कैसे important पता reminder. करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? राइट, तो सर how put in important space मतलब important हम अपने important मतलब कैसे रखेंगे कि मैं बता रहा important हूँ है. कि कीवर्ड्स हैं। जैसे आप देखोगे ना पूरे आंसर में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चंस को आप एक्सप्लेन करते हो। ये सर जैसे में ये होता है कि जैसे पर्सनल लाइफ में भी जो होती है, तो जैसे पढ़ाई करते हैं तो वो भी माइंड में घूमती है, तो मतलब फोकस नहीं कर पाते हैं उधर. तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि जब आप इमेज बनाओगे तो आपका फोकस इमेज की तरफ जाएगा। विजुअलाइजेशन जब आप करते हो ना, ग्लास ऑफ वाटर जब आप लेने गए थे, वो एक्सरसाइज किया था आपने? यस सर, यस सर. तो जब आप ग्लास ऑफ वाटर लेने जा रहे थे तो उस समय दिमाग वहीं पे कंसंट्रेटेड था। दैट्स व्हाई दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। एक बार करने की कोशिश तो करो, बिलीव मी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। यस सर. और सर जो शॉर्ट टाइम मतलब जो रिवीजन का है, तो उसमें ऐसे मतलब लगता है कि हर बार ही रिवाइज करते रहो कि मतलब अलग सा पढ़ने. आपको 5 बार रिवाइज करना है या 4 बार रिवाइज करना है ना, तो उसी फार्मूले पे स्टिक करो, अपने से कोई फार्मूला मत बनाओ। ओके सर. किसी पे तो भरोसा करोगी कभी? यस यस. डॉक्टर ने कहा कि 8 घंटे बाद पैरासीटामोल लेना है, अब बुखार आ गया 6 घंटे में या 5 घंटे में, तो आप जाके ले लोगे तो क्या होगा? किडनी लीवर तो खराब होगा ना। यस सर. तो किसी पे भरोसा करो कि अगर किसी ने उतना सारा रिसर्च किया होगा, साइंटिफिक डेटा निकाल के लाया होगा, इतने सारे एफर्ट करे होंगे उसने मेमोरी पावर को डेवलप करने के लिए, तो उसको यूज करो। ओके सर. हम हर चीज इनोवेट नहीं कर सकते, हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। गरिमा ने, सॉरी, निहारिका। Yes, sir. Uh, So I think today's class is really useful for me because as my examinations are coming, I'm really going to use these tips and ideas for my examination. You told us about the correct timing for repetition, for long-term and short-term memory, and you also told us about
picturizing and visualizing things to retain the memories for long term. And uh, I think these ideas are very useful, and I'm really going to apply these things for my examination. Thank you, Very sir. good. Yeah, thank you. Yes, Srishti Agrawal. So that the timings for revision, when to revise, to make it, to make so that the memory, so that we can remember the things, was really very helpful. Will be helpful for me because my CA examinations are from next month. So for me, this will really help me to remember the things because right now I was forgetting the things, especially in law subject. It was a bit difficult for me to retain the things, but I think now these revision timings will help me to retain them. Chalo, great, very good. At least you are using it. Yes, Sivangi Pandey. Hmm. I learned a lot from these classes, especially the repetition means for a short-term memory or for a long-term. You explain how to retain the things. I think it is most useful for our competitive examination, the competitive which we are going to give after 2 or 3 years. For example, we are in graduation. If we want to give UPSC attempts, so after means if we are preparing the basics or NCRTs or anything, so for long term, the repetition of these multiple revisions or within the short frame, if we are learning a particular thing today, so revise it within 20 to 25 minutes, then the methods or the tactics you told is will be great useful for us. Thank you. Okay, Mushira. So, sir, the session was again a great one, which would help us a lot, not only for exams, but also in our daily life. Earlier, our memory was like that of a 80 years old person, but now it will be more realistic. It would be like that of a 18-year person only, and yes, it will help us a lot. Great, thank you. Yeah, Ankita. So I think I'm definitely going to apply these methods as I was always in search of these things. But from people, I always got review that write everything 3 times or 5 times to remember. But I never had that much time. Having 6 subjects and writing entire book is never going to help. So, sir, I'm going to definitely apply these things, especially when giving smart replies to others, quick response. We need key terms, and I think this process is going to help me a lot. Thank you, sir. Excellent, excellent. Yes, Ashwarya. So the information which you gave us today was really helpful for me, as I usually make notes by making charts or diagrams, but I never revise things very often. But today I learned that revising things is very important to retain in our mind for a very long period of time. So I'll definitely memorize things and repeatedly. So I'll definitely apply this in my life so that It's a very simple actually. Ki make a first you convert your answers into picture. yeah. One. Visualizations are very useful for us so that we can visualize things while writing in our examination. Yeah. And then just 2, 3 steps are there. First, immediate repetition. Second, Yeah. after 15 to 20 minutes. Third, after 5 to 6 hours. And fourth, after 24 hours. For short Sir, term. For I never used to do it earlier, but definitely I'll do. yeah, no problem. Yes, yes, Kushi. Kushi Chamadia. So actually, I like to say that I have used the flowchart technique in my 12th board exam, and that really helped me. And it also helped me to score really good marks by putting really less amount of effort. And I'll surely try the repetition technique because I don't really revise that often. So this will surely help me in scoring good marks. Okay, Thank great. you, sir. Yeah, Diksha. Yes, sir, this was very useful session because before that I was not revising the things. I just study and study, but don't revise the things. But now I have understand that it is very important to revise the things.
And and I don't won't get get time. into this flow कि मुझे 4 घंटा पढ़ना है. आधा Yes, घंटा sir. पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लो. That will be more valuable. Yes. Yeah. Gracika. Yes, sir. It was a fruitful session. I learned about that repetition things, but the you said about that picturizing. So I have been doing this for years. Actually, I have always making my notes with colorful pens because it's kind of attractive and creative. So it's make me remember the things. And also in my board examination, I have write my answers in that form in a point. So it will be easy for the examiner to give me the marks according to the points because if you have a subject like history, you have to write almost 2-3 pages, and it's kind of difficult for examination to read it. Also, if we highlight the points by simply lining the with a pencil, so it's kind of easier for them and also for us that we are focusing on particular key points. So having, but that repetition method is kind of new, and if anyone would be trying that picturizing method, so I can assure that everyone that it's very helpful. It's got me 96% in 10th and 12th, so I can assure that it is very helpful for them. Very good. So, yeah, Khushi Maurya. Yes, sir. Today's session is very informative and as well as treasure for the student and like us. And like I'm trying to do my best to use this technique in my study, like repetition technique, and as well as some tips like short-term memory and long-term memories. I definitely try this. Okay. Everybody has spoken. Thank you, Garima, have you already spoken? Yes, sir. Okay. So guys, all the best and do well in your life. And I hope that this is one of the biggest fear, exam fear. So at least with this kind of techniques, it may help you, right? And based on, at least you should give it a try. And let's see if it works for you, nothing great like that. At least the biggest part of your fear will go away. And second, open the chapter and you will see that there is a pattern of questions from each chapter, which you may see for last 5 years question paper, and every chapter is having a marks variation from 5 marks to 10 marks. So give average marks to each chapter. So, and if 1 chapter, 3 chapter, 5 chapter, your chapters are ready, so based on that, you calculate that on an average 7 marks, 5 chapters are ready, 35 marks is confirmed. Suppose you want to target for some more marks, so what are those chapters where I have to focus? So through that, you will be knowing how much score I am going to do in this question, in this exam. So you can predict your marks as well. आप हर चैप्टर पे उसके एवरेज मार्क्स लिख दो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के बेस पे एंड देखो फिर आप आपका आंसर. तो यू मेक योर लाइफ मच मोर इजियर. एग्जाम उतना टफ नहीं होता जितना हमारी प्लानिंग नहीं होती एग्जाम को देने की. अभी क्या है कि एग्जाम को आप स्ट्रेटेजिकली हैंडल कर रहे हो, एज ए प्रोफेशनल हैंडल कर रहे हो, न कि इमोशनल हैंडल करते हो. हम क्या करते हैं, एग्जाम को इमोशनली हैंडल करते हैं. एग्जाम है फियर के साथ मिक्स करके हैंडल करते हैं. अभी क्या है, आप लॉजिक के साथ यूज करके आप उसको हैंडल कर रहे हो. तो पॉसिबली आंसर विल बी, मतलब जो आपका रिजल्ट होगा वो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड होगा. योर सक्सेस रेशियो विल मे गो अप. ठीक है, तो यूज दिस टेक्निक्स एंड दैट्स व्हाई दिस क्लास इज वेरी डिफरेंट. कि वी आर नॉट ओनली टेकिंग केयर ऑफ योर मेमोरी, योर पर्सनैलिटी, your communication, your exams, but all other aspects, right? And that's why we take guarantee. We don't take warranty कि आप बदल जाओगे. आपका कॉन्फिडेंस बदल जाएगा. और ये हम नहीं बोलेंगे, आपके रिलेटिव्स आके बोलेंगे, फ्रेंड्स बोलेंगे कि आप बदल गए हो. क्योंकि ये सब जितना आप जान लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बदल जाएगा. अब आपको एग्जाम से डर नहीं लगेगा. आपको डर इस बात का लगेगा कि डर क्यों नहीं लग रहा एग्जाम में, राइट? सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच गाइस. डू वेल इन योर लाइफ. थैंक्स अ लॉट.
Thank you. Thank you, sir.